करूंगा, लेकिन क्योंकि हम पूरी दुनिया में बताना चाहते हैं अपनी मज़लूमियत की कहानी, और उसका जो मकसद है वो किसी को बदनाम करना नहीं है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि हम ये विक्टिम हैं और ये इससे पाकिस्तान का जो इमेज है वो बहुत बुरी तरह मुतासर हो रहा है। तो मैं अब इंग्लिश में इसको कहूँगा। थैंक यू वेरी मच for coming today. This press conference or this conversation, we are doing it just to apprise the world what is the status of human rights violation in Pakistan, and particularly Bold TV. We has been facing this situation for quite some time. Last year our President Nabil Jakura was kidnapped, and we had all the photographs, we have the evidence, we have the vehicle numbers, we even showed the pictures of those who kidnapped him, but no one paid attention to that. He was released after a few days. Nobody has asked question to those who kidnapped him. Then what we witnessed, what we experienced, there were vehicles, special vehicles which are called Dalas in our language, Vigo small trucks. We all know who carries them. They were coming to surround the Bol buildings in Karachi. They were following our journalist, and they also went to the house of our co-chairman Shoaib Sheikh. Our finance people, marketing people were being followed, and at Karsas couple of weeks back, our staff was stopped, but then they were allowed to go. 3 days back, Mr. Akash, who is head of marketing department of Bol, some unknown people entered his house forcibly, and they dragged him out. They put him in that small truck and took him away. Besides that, they also picked up 3 more people. One was a cook, other was a guard, and then there was another guy who was picked up. He was caretaker of the building, 75-year-old, a patient of diabetes. We don't know whether he is getting his medicine or not. I decided to hold this press conference because when I heard the appeal of mother of Akash, she was crying. It really touched my heart. She is a Hindu by religion. She was appealing to the Chief Justice. She was appealing to the army chief. And she was saying कि मुसलमानों, मैं आपको आपके अल्लाह का वास्ता देती हूँ कि मेरा बेटा मुझे लौटा दो. It really touched my heart. That's why I decided that we should come forward, and we should approach those organizations who do see these type of incidents, these type of atrocities. Her mother said, he is not a Muslim. I agree, he is not a Muslim, but he is a patriotic Pakistani. उसने पाकिस्तान की बहुत खिदमत की है. He has served Pakistan and he is serving Pakistan, and we don't have any animosity. Please return my son. The point which I want to highlight, which I want to make is, we have seen religious minorities being treated differently, discriminatory attitude we have seen. Government has in the past, our authorities, they have always tried to uplift that, try to improve that. But in past, whatever happened, whatever atrocities inflicted, they were done by the individuals or by some groups, not by the government, not by the state. Here in this case, in Akash Ram's case, a Hindu minority member has been picked up by government or state.
It has destroyed the image of Pakistan. Is there someone who take note of this situation, how serious it is? Pakistan can face a lot of loss, great damage. European Union, Americans, we are trying to go for an agreement with IMF. But here what we are doing with our minorities? This is a very sad situation. And I would also like to say that we are not challenging authority of any institution or any individual. We are just explaining how we are being victimized. The purpose of this conversation is only just to get Akash Ram back and also warn those who are controlling the affairs that this is something not good for the country. You are damaging the interest of this country. You are, by doing this, Allah na kare, Khuda na kare, there can be a stigma on the name of my country. It's a country of 22 crore people. It's a nuclear state, resilient people who have always stood with the right. So these are our humble submissions. We are victims and we are appealing. World organizations, human rights organizations, to put your influence, to tell these authorities, don't do that. It has great connection with what is happening in the country. Akash Ram has no animosity with any government agency. It is Bol. It is the coverage which Bol gives. And what we have done wrong, what we have done against Pakistan, according to the law under which we get license from the PEMRA, we are supposed to apprise the public about every aspect of any incident. Our channel is open. We don't put any ban on anything. Yes, what we did during the last 3, 4, 5 days, there was abuse against judiciary, and we decided not to show, not to air the voice of those who were abusing judiciary. That's all, and this is what our constitution says. This is what the constitution of Pakistan says. All judicial and executive authorities have to come in the aid of the Supreme Court of Pakistan. The conduct of judge cannot be discussed. Article 68 says, even on the floor of the house. But here, the judges were being called with the different names, and we decided not to air that. And we are proud of it, and we will continue doing whatever our law says to do. But we are not challenging any authority. We are simply a news channel. We don't have any force. We simply have this mic, this camera, and maybe this pen, these small phones which we used as cameras. This is what we have. But what is our strength? The people of Pakistan, Constitution of Pakistan, and we'll keep on doing. Mr. Siddique Jan, our bureau chief, he is with me, and I would like him to say something. You can speak in English, you can speak in Urdu, whatever you like. बहुत शुक्रिया। समी इब्राहिम साहब ने जो जिक्र किया आकाश साहब की वालदा का, अगर आप इजाज़त दें तो मैं उनका वो क्लिप जो है वो सुना दूं। प्लीज़। और समी साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि जब हमने उनकी वालदा का वो दुख और तकलीफ़ और वो कर्ब, वो अज़ियत वो देखी और उनकी जो गुफ्तगू सुनी, तो उसके बाद फिर हमने फ़ैसला किया कि हमें ये बात करनी चाहिए, क्योंकि आकाश का किसी के साथ कोई मसला नहीं है। मसला है तो वो समी इब्राहिम साहब से है, मसला है तो वो इमरान रियाज़ ख़ान से है, मसला है तो वो हमारे उन दीगर दोस्तों से जिनके साथ पहले भी हुआ। इमरान रियाज़ के साथ क्या हुआ,
समी साहब के साथ, सदीक जान के आपके साथ क्या हुआ, जमील फारूकी के साथ क्या हुआ? तो मसला हम लोगों से है, तो हमसे बात करें, जो करना है हमारे खिलाफ करें। उनका क्या कसूर है आकाश का? क्या आप आकाश को उठा के ले गए? और पिछले 1 साल में इंसानी हकूक़ की जो पामालियाँ की गई, उसने पाकिस्तान के 75 बरसों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 1 साल में जो पाकिस्तान के अंदर हुआ है, पाकिस्तान के अवाम में जाके देखें, मायूसी देखें, तकलीफ़ देखें, लोगों को अंधेरा नज़र आता है, मुस्तकबिल तारीक नज़र आता है। हर दूसरा पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़ के जाना चाहता है। ये हालात कर दिए गए यहाँ पाकिस्तान के अंदर आपने, सिर्फ ज़िद और अना के अंदर, अपने ज़ाती मफादात के अंदर। मैं चाहूँगा कि मैं आकाश साहब की वालदा का वो क्लिप आपको ज़रूर सुनाऊँ जो बोल ने रिपोर्ट किया और जिसने हर पाकिस्तानी को सोगवार कर दिया, तकलीफ़ में मुब्तला कर दिया कि क्या कर रही है हमारी हुकूमत। और हमारे वज़ीर ख़ारजा बिलावल साहब जो पूरी दुनिया में जाकर अपनी CV जमा कराते फिर हैं, उनकी हुकूमत है वहाँ पर, सिंध हुकूमत है। हमने गाड़ियों के नंबर तक बता दिए हैं, हमने तस्वीरें तक दिखा दी हैं कि कौन लोग थे उठाने वाले, और 3 दिन में कोई किसी तरह की कार्रवाई जो है वो नहीं हुई। ये ज़रा सुनिए। बेटे की जुदाई के हवाले से, बेटे की जुदाई में निढाल, आंखों में आंसू, दिल में बेटे की वापसी की आस, आकाश की दुखियारी माँ की बाजियाबी के लिए फरियाद। वीडियो पैगाम में कहा, आकाश हिंदू जरूर है लेकिन है तो पाकिस्तानी, गरीबों की मदद करता है, मुल्क के लिए हमने क्या कुछ नहीं किया। अदालत, जजेस और मुल्क भर के मुसलमानों से अपील है कि मेरा बेटा वापस आ जाए। आकाश मुझे बहुत याद आता है, मेहरबानी करके मेरा आकाश मुझे वापस कर दे। वापस कयो ताजी मेहरबानी थी वडी इतना जो मुसलमान मुझे बचो हिंदू बनाए तो जो आज पाकिस्तानी मुझे पुट आकाश मुखे वापस कयो मुखे कल का डाडो याद तो चे मुझे बचो सुबह जो 6 बजे ईंदो आ मुखे उतारे ईंदो आ मुझे बचो कल का आयो मुझे बचो कल का आयो 8 बजे हम सो रहे थे। मेरे छोटे बेटे ने फोन किया, मम्मा आकाश को कोई उठा के लेके चला गया है। हम सुबह 8 बजे से अभी तक परेशान हैं, कोई मेरे बेटे का पता नहीं लगा है। मेहरबानी करके मेरे बेटे का पता लगा, मेरा बेटा कहाँ है, आखिर क्यों उठाया गया उसको, वो बेगुनाह है। मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ, वो बेगुनाह है, मेरे बेटे को मेरे पास लेके आओ। मेहरबानी करो, मेरा बेटा मुझे वापस करो, कल से मेरा बेटा घूमे। ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों होता है इस मुल्क में, कौन सा हमारा कसूर है? मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। हमने इस पाकिस्तान के लिए क्या कुछ नहीं किया है, मेरे बेटे ने क्या कुछ नहीं किया है पाकिस्तान के लिए। वो तो हमेशा गरीबों की मदद करता है, गरीबों के लिए काम करता है, फिर क्या कसूर है मेरे बेटे का? खुदा का वास्ता है, अल्लाह का वास्ता है, मेरा बेटा वापस करो। मेरा बेटा मुझे वापस करो, मुझे आकाश चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ये आवाज़ है एक माँ की, ये अपील है उस माँ की जिसके बेटे को 3 दिन से लापता किया गया है और अभी तक नहीं बताया जा रहा कि उसके बेटे का कसूर क्या था। उस माँ को नहीं पता, लेकिन हम जानते हैं उसका कोई कसूर नहीं था। कसूरवार हम लोग हैं जो हम बोल पे बोल रहे हैं और उसकी कीमत कोई और चुका रहा है। कभी शुएब साहब को उठाया जाता है, कभी छापे मारे जाते हैं, कभी धमकियां दी जाती हैं और अब आकाश को उठा लिया गया है। क्या ये हमारी तरजीहात हैं? 35 लोग आटे और राशन की लाइनों में लग के अपनी जान दे चुके हैं। कराची में 3 माह में 21,000 जराइम हुए हैं। रोज़ाना 233 वारदातें हो रही हैं, हर घंटे में 10 वारदातें हो रही हैं। हर 2 दिन में एक इंसानी जान जो है वो किसी क्राइम में जा रही है। चोर डाकू लुटेरे इंसानी जानें ले रहे हैं। और हमारी तरजीहात क्या है कि बोल को बोलने से रोकना है और इस तरह से जुल्म, जबर, तशद्दुद और ये फस्तायत जो है इसको बरकरार रखना और नए जुल्म के रिकॉर्ड जो है वो कायम करने हैं। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज तो हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये चीज़ें सामने रख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि अगर 2-3 दिन के अंदर अंदर ये मामला हल नहीं होता, पहली बात तो है कि फ़ौरन होना चाहिए। अगर उसने कोई जुर्म किया है, कोई इल्ज़ाम है, तो आप अदालत में पेश करते हैं, आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करते हैं, जो कि नहीं है, हमें भी पता है कुछ नहीं है। ऑप्शन फिर यही है कि सोमवार के दिन से हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने कैंप लगाएं, उनकी फैमिली को भी बुलाएं, उनकी वालदा को भी बुलाएं और हम सब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठ जाएं। जब सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है कि इंसानी हकूक़ की पामालियों पर सुप्रीम कोर्ट ने ही हरकत में आना है,
और उनको एक्शन लेना है तो फिर हम सुप्रीम कोर्ट के सामने कैंप लगा के बैठ जाएंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक आकाश वापस नहीं आएगा। कोई नहीं, अगर कोई सवाल दोस्त अगर करना चाहें तो वी आर हियर, एनी क्वेश्चन इफ यू गाइस वांट। जी समी साहब, ये मुझे बता दें कि एफआईआर आपने करवाई है, एफआईआर हो चुकी है, सिंध हुकूमत से आपने रब्ता किया है, क्योंकि वहाँ जो कुछ किया सिंध हुकूमत भी तो जवाब दे है, क्योंकि जुरिस्डिक्शन में ये सारा कुछ हो रहा है, उन्होंने आपको क्या कुछ जवाब दिया? सबसे हमने बात की है, वी हैव बीन टॉकिंग टू द अथॉरिटीज़, every authority says that we don't have Akash. This is what is the practice. This is something new in this country. People are picked up, then they remain disappeared for 5, 7, 8, 10 days, and then all of a sudden news comes that the person has come back to his family, and they are not willing to talk to media. They are not willing to talk to anyone, and nobody questions those who picked up. But I remember Imran Khan's statement. He said that normally people are picked up by the police, but then their custody is given to the नामालूम अफराद, and then whatever operation is done या whatever मालिश जो हमें ज़बान इस्तेमाल करते हैं, it is done by नामालूम अफराद, and then again the person is given to the police to return it back to the family. But the important thing is that it's almost 1 year now. No one has been punished for committing this judicial torture. No one has been committed, no one has been convicted, no one has been asked a question. तो ये एक बड़ा एक सवाल। अच्छा, एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, हम सब यहाँ बैठे हैं इस हॉल में, किसी से पूछ ले, सबको पता है ये कौन कर रहा है, मुझे भी पता है ये कौन कर रहा है, सबको पता है, बट कब तक होगा ये? Until what time? How long it will continue? That is the reason. अच्छा, हमारे साथ तो हो रहा था, एक हमारी जो रिलीजियस जो एक मिनॉरिटी है, उसके साथ आप ये करके पाकिस्तान के इमेज को पूरी दुनिया में बर्बाद करना चाहते हैं। खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, लेकिन व्हाट मैसेज आर यू सेंडिंग आउट? हाउ इंडियन मीडिया विल प्ले विद दिस? हाउ एनिमीज ऑफ पाकिस्तान विल प्ले विद दिस फैक्ट कि आपने एक हिंदू को उठा लिया है एंड इट्स बीन पिक्ड अप बाय सम गवर्नमेंट एजेंसी। सो हमने सबसे बात की है जुल्करनैन, बट हमें किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो सब कहते हैं जी हमें तो कुछ पता नहीं, बस आप इंतज़ार करें। इसमें जो बाकी मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसका क्या है? इसमें कोई जेटी का गुजारा है क्या? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट इम्तियाज़, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड। माजी में भी ऐसा होता रहा है, शायद हम भी कहीं उसमें रहे हों, मैं तो तब भी जब भी मौका मिलता है उस बात की हम माफ़ी मांगते हैं, और अभी हमारा रिकॉर्ड बताता है, चाहे जियो हो चाहे ARY हो, किसी पर भी कुछ हुआ है तो बोल के लोग सबसे पहले आए आगे, एंड वी हैव ऑलवेज रेज दिस इशू के पीपल, आईने पाकिस्तान इस बात की इजाज़त देता है कि पीपल दे शुड लिव विद देयर थाट्स एंड आइडियाज़, दे आर इंटाइटल्ड टू लिव विद देयर थाट्स। अनफॉर्चुनेटली जो मीडिया है वो मफादात कह लें, दबाव कह लें, कुछ भी, मैं किसी पर कोई तनकीद नहीं करता, बल्कि मैं उनसे सिर्फ यही दरख्वास्त करूँगा, दिखाएं, एक एक करके सबको मारेंगे, पहले भी मारते रहे हैं, हमें तो एहसास हो गया इसका। और मैं तो यहाँ पे कहता हूँ कि ये जियो का माइक पड़ा है, ARY का माइक पड़ा है, कोई भी चैनल, किसी पर भी इस हुकूमत ने पाबंदी लगाई, किसी भी जर्नलिस्ट को उठाया, चाहे उसका किसी भी चैनल से ताल्लुक़ है, बोल सबसे पहले उसकी लड़ाई लड़ेगा। और हम माजी में अगर ऐसा नहीं कर सके तो हम तो इसकी कई दफ़ा माजरत करते हैं, अभी भी इसकी माजरत करते हैं, लेकिन इकट्ठा अगर आप सब होएंगे तो फिर ये मामला होएगा, अदरवाइज़ तो ये एक एक करके मारेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। मनाजिर देख रहे थे प्रेस क्लब के, जहां पर बोल टीवी के सीनियर एंकर पर्सन और प्रेसिडेंट बात कर रहे थे, और आकाश जो बोल के मार्केटिंग हेड हैं, उनको जिस तरह से अगवा किया गया है, और इतने घंटे गुजरने के बाद 3 दिन अगवा को गुजर गए, कुछ नहीं मालूम हो सका, उस पर तमाम हक़ाइक़ से आगाह किया गया है इंटरनेशनल मीडिया को। समी इब्राहिम साहब ने, और आकाश को गुज़श्ता रोज़ सुबह 6 बजे डिफेंस में घर से अगवा किया गया था, लेकिन उसके बाद से पुलिस भी कुछ भी बताने से गुरेजा है, और अहले खाना को बिल्कुल गाइड नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं बताया जा रहा।
अब तीसरा दिन हो चुका है और अभी तक कुछ नहीं मालूम हो सका। पुलिस हुकाम आकाश का सुराग लगाने में बिल्कुल नाकाम है। नामालूम अफराद, गार्ड, खानसामा, चौकीदार को भी साथ ले गए, हर तरह के हकाइक बता दिए, गाड़ी की नंबर प्लेट्स के बारे में बता दिया, नंबर्स बता दिए, लेकिन उसके बावजूद अब तक कुछ नहीं पता चल सका। समी इब्राहिम जो कि इंटरनेशनल मीडिया को एड्रेस कर रहे थे, उन्होंने इंग्लिश में सारा कुछ बताया कि किस तरह से निशाना